In this poem, Pablo Neruda has emphasized on the importance of introspection. In fact, man has become very much selfish and his own actions cause him many miseries. The poet talks about the necessity of creating a feeling of mutual understanding among human beings. First stanza. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. The poet urges that each one of us to count to 12 and then be quiet. He wants a moment of silence on earth where people should not quarrel with each other or fight with each other in the name of language or religion. In this way, there will be no language barrier between people. No harsh words will be spoken. In this moment of silence, the poet does not want anyone to move their arms. He wants us to remain motionless. In fact, poet हमें ये बताना चाहता है कि हमारी बाजुएं, आर्म्स हमारी उठती तो हैं, लेकिन दुआ के लिए नहीं और किसी को आशीर्वाद भी देने के लिए नहीं, ना ही हाथ जोड़ने के लिए. हमारी भुजाएं उठती हैं तो मार काट के लिए और गलत कामों के लिए. एंड जस्ट ही वॉन्ट्स दैट वी शुड जस्ट पुट ए ब्रेक टू सच टाइप ऑफ destructive activities. Stanza 2. It would be an exotic moment, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. In this stanza, exotic means enticing, यानी कि मन को मोहने वाला. The poet feels that the moment of silence would be an unusual and exciting one. There will be no hurry or the sound of machines to pollute the atmosphere. It will be a strange and unfamiliar moment with stillness all around, and everybody will enjoy it. In this unusual period, the bonds of humanity will get stronger. Some good feelings will come to our heart and we will do something good. Stanza 3. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. In fact, Pablo Neruda ने ये जो फंडा लिया है 12 तक गिरने का, he has taken from clock, क्योंकि clock में 12 नंबर होते हैं. और इस stanza में he is trying to say, in this moment of inactivity, the fisherman would not be catching fish, hence the whale in the cold water will be safe. Also the men who gather salt will be able to tend to their wounded hands for which he had no time earlier. Stanza 4. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Those who prepare green wars means who are involved in cutting trees, they are thoughtlessly cutting forests. And wars with gases means there are so many gases which are polluting the environment. And wars with fire, there are so many countries which keep on fighting with each other and they just make nuclear bombs. Who can forget the example of Hiroshima and Nagasaki, two beautiful cities of Japan which were burnt to ashes. And victory with no survivors. इन कंट्रीज को ये नहीं पता, इन सुपर पावर कंट्रीज को ये नहीं पता कि ये जीत तो जाएंगे. दे विल बी हैविंग विक्ट्री, दे विल बी विक्टोरियस, लेकिन जीत की जश्न मनाने वाला या जीत की खुशियां मनाने वाला कोई बचेगा नहीं, सर्वाइवर. एंड वॉर ने आज तक किसका भला किया है? वॉर इज ऑलवेज बैड. देन द पोइट सेज कि ये सब कंट्रीज, ये सब लोग जो ऐसी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं, दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो साफ़ सुथरे कपड़े डालेंगे. एंड दे विल टॉक टू देयर ब्रदर्स एंड दे विल बी डूइंग समथिंग क्रिएटिव. दे विल बी टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे विल बी आस्किंग अबाउट ईच अदर्स joys and sorrows, and there will be sharing and caring with each other. Stanza 5. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death.
इस पर्टिकुलर स्टेंजा में पैब्लो नेरुदा हमें ये बताना चाहता है कि ही ट्रक मीन्स ही डज नॉट वांट टू एसोसिएट हिज आइडिया विद डेथ. द पोएट मेक्स ए क्लैरिफिकेशन that though he is advocating the need for silence for introspection, but we should not be confused with total inactivity. हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सभी चीज़ों को डेड होने के लिए कह रहा है. Actually, he does not want any association with death, and he says that life is meant to be lived. Life means keep on moving. जीवन चलने का राम, चलते रहो सुबह शाम. एंड वो हमें ये नहीं कहता कि सभी चीज़ें परमानेंटली डेड हो जाएं. ही इज़ जस्ट आस्किंग फॉर 12 सेकेंड्स, और जब तक वो 12 तक गिनेगा तब तक वी शुड कीप अ ब्रेक ऑन द हमड्रम ऑफ आवर लाइफ. स्टैंजा 6. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. इस स्टेंजा में पैब्लो नेरुदा ये वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि वी शुड नॉट बी सेल्फिश. हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हम जस्ट थोड़े से पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो नेचर के अगेंस्ट हो, चाहे वो इंसानियत यानी कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो. The poet further advises that people should stop being self-centered and selfish. For one moment, they should not think of keeping their lives moving, meeting their ends, and fulfilling their selfish needs. In fact, man has forgotten the real purpose for which he was sent by God to this earth. If he just fulfills the needs of his fellow beings, he helps them, तो शायद एक उदासी जिसने उसको घेर रखा है, उसकी सेल्फिशनेस की वजह से दिस सैडनेस विल डिसअपियर फ्रॉम हिज लाइफ. और ये तभी हो सकता है जब वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा, जब अपने अंदर झांक के देखेगा कि क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया. इनफैक्ट पीपल हैव बीन थ्रेटनिंग देमसेल्व्स विद डेथ बाय देयर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, एंड दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस विल गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स इन अ बेटर वे. Last stanza, stanza 7. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go and I will go. The poet feels that the earth can enlighten us and guide us in this process of keeping quiet. He wants us to observe that there is some activity under apparent stillness. For example, during the autumn season, a seed appears to be dead. पेड़ भी बिल्कुल गंजे हो जाते हैं और उनके पत्ते सब झड़ जाते हैं. But huge fruit bearing trees are born from such seeds lying dead here and there. During winters, ये जो बीज हैं ये सब जो है ना धरती के नीचे दबे रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि बस अब तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल शांत है, बट ऐसा नहीं होता. फाइनली जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं वैसे ही जो है ना बसंत का मौसम यानी कि बसंत पंचमी और बसंत का मौसम आ जाता है और वही बीज जो नीचे दबे हुए थे दे कीप ऑन स्प्राउटिंग और सब जगह हरियाली छा जाती है. अब पोएट हमें ये कह रहा है ही वॉन्ट्स टू कीप अस क्वाइट वाइल ही इज़ काउंटिंग टू 12. बस वो हमें ये रिक्वेस्ट कर रहा है मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब चुप रहना.